students, welcome again. We have started with our environment, that is, you can say it as an ecosystem too. We have discussed type of ecosystem, and in last video we have seen food chain and food web. Am I clear? Okay my dear students, if I am talking about food chain, then it is a single chain which actually do not exist, right? Since we very well know that animals can be eaten up by one or more animals, which in turn can be eaten up by many other animals. Am I clear? It is not so that lion eats only deer. Lion can have goat as a food, lion can have zebra as a food, right? Or any other animal can be a food of lion. So my dear students, in nature there exists interconnection between different food chain, and that is what I mean by food web. Chalo, with one example, if I want to say, explain you the same. If I am talking about you people only, रोज आपको आपकी मम्मी से फॉर एग्जाम्पल रोटी सब्जी दे. Every day your mother is giving you roti sabzi, and imagine entire human population every day is eating roti sabzi. What will happen? You will get bored, point number one. And to feed entire human population this vegetables and this rotis, matlab wheat, will not be enough, and thus we are having multiple options for food. Yes or no? We are having pizzas, we are having burgers, right? We are having your khichdi and many more dishes we people are having. Similarly, if we are talking about animals, then animals do not have only one type of food. Animals do not have only one type of food. जैसे मैंने आपको बोला lion eats deer. It is not so. वो बोर हो जाएगा ना deer को खा खा के. Yes, so my dear students, lion will go for more than one option. मतलब वो zebra को भी खाए, वो goat को भी खाए, वो sheep को भी खाए, अलग अलग taste करे. Are you people getting my point? And this interconnection of food chain is what I mean by food web. उसको ही क्या कहा जाता है? Food web. Now let's talk about energy flow in this lecture. Let's talk about energy flow. Okay, my dear students, if I am talking about energy flow, then the flow of energy is यूनिडायरेक्शनल. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनर्जी का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल. Unidirectional in the sense what I am talking about here. Dear students, we very well know that solar energy is used up by only producers. सोलर एनर्जी कौन यूज कर सकता है? ओनली प्रोड्यूसर्स. सो व्हाट आई एम राइटिंग ओवर हियर दिस वे, प्रोड्यूसर्स, राइट? फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एनर्जी इज गोइंग टू वेयर? Herbivores. From herbivores it is moving on to your, yes, carnivores. From carnivores it is going on to your top carnivores. Yes or no? Yes. So this is flow of energy. ये क्या है बच्चों? What is this? This is flow of energy. ठीक है? And if I am talking about this flow of energy, it is unidirectional. That is, it goes in this direction only, from producers to herbivores, herbivores to carnivores, carnivores to top carnivores. It is not so कि अगर प्रोड्यूसर्स को एनर्जी की जरूरत पड़ी तो हार्बिवर्स उसको देंगे. इट इज नॉट सो. द एनर्जी टेकन अप बाय प्रोड्यूसर्स डू नॉट रिवर्ट बैक टू सोलर एनर्जी. वो सन पे वापस नहीं जाएगी. द एनर्जी टेकन अप बाय हार्बिवर्स डू नॉट गेट बैक टू, मतलब डू नॉट रिवर्ट टू प्रोड्यूसर्स. मतलब रिवर्स प्रोसेस नहीं है. It's one way. It's one way. There is no U-turn. Are you people getting my point? Plants ने solar energy use करके खाना बनाया.
this energy will not be given back to that solar system. Are you people getting my point? Yes. Similarly, the producers ने energy किसको दी? Herbivores को दी. तो herbivores in no condition revert back its energy to producers, and thus the flow of energy is unidirectional. Second point, at each trophic level, there is I can say progressive diminish of energy. Diminish का मतलब होता है कम होना. Diminish का मतलब क्या होता है? कम होना. Am I clear? So at each trophic level, amount of energy available decreases. Am I clear? We very well know 10% law. To each trophic level, only 10% passes, as most of that is dissipated, है ना? Most of that is dissipated in form of heat. Am I clear? Most of that is dissipated in form of heat. So amount of energy at successive trophic level decreases. Am I clear? So dear students, this is all about your energy flow. Now I am going to make you understand another important topic, and that is called as your biomagnification. This is important one. Biomagnification. ऊपर जो है वो क्या है आपका energy flow, and that is the chart. This is your energy flow. Okay, chalo. Now if I am talking about your biomagnification, right? Then biomagnification, I can say, chalo, before this, we people have understood pollution. Water pollution कैसे होता है आप सबको अच्छे से पता है. We people have already understood in your previous standards. Yes or no? Yes. By release of chemicals or pesticides, right? Our soil or water gets polluted. Why we are using pesticides or chemicals? What is the purpose for the same? For protecting crops from pests and diseases. Are you people getting my point? Yes or no? Once again, what I am saying, understand very carefully. If I am talking about crops, right? तो crops को protect करने के लिए what we are adding in soil? We are adding pesticides, right? And certain chemicals we are adding to protect these crops against pests and diseases. And this is how this pesticides and chemical enters soil as well as water bodies. From soil, it will be taken up by land plants, and from water, it will be taken up by aquatic plants. Are you people getting my point? And this is how they enters food chain. This is how they enters food chain. Are you people getting my point? चलो वापस से एक बार, खेत है, खेत में आपने कुछ क्रॉप्स उगाए हैं. से फॉर एग्जाम्पल वी पीपल हैव ग्रोन व्हीट. फार्म है, फार्म में हमने व्हीट को ग्रो किया है. टू प्रोटेक्ट दिस प्लांट अगेंस्ट पेस्ट एंड डिजीजेस, आप अपने फार्म में या खेत में व्हाट यू आर गोइंग टू ऐड? यू आर गोइंग टू ऐड पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स. Now this pesticides जो आपने soil में डाला है, it enters soil. From soil it enters land plant. Plant से it gets incorporated in that wheat. यहाँ पे we have taken example of wheat, and this wheat or rice you can say, which we people are have some proportion of pesticides. What is
द रीजन फॉर द सेम, ये जो केमिकल्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम राइटिंग ओवर हियर, ये जो केमिकल्स है आर नॉट डिग्रेडेबल, दे आर नॉट डिग्रेडेबल, मतलब इसका ब्रेक डाउन नहीं होता, दे आर नॉट मेटाबोलाइज, they are not excreted to, they are not metabolized, not excreted to, they remains as such, they remains as such. So one example if I want to plot over here, not related to this, आपने देखा होगा कि फिश के इंटीरियर में या स्टमक में आपको पाया जाता है प्लास्टिक, प्लास्टिक इज नॉट डिग्रेडेबल, वो डिग्रेडेबल नहीं है, ना तो वो फिश उसको मेटाबोलाइज कर पाएंगी, ना तो एक्सक्रीट कर पाएंगी, इस वजह से दैट प्लास्टिक गेट्स एक्यूमुलेटेड इन दैट फिश, वो प्लास्टिक है फिश में एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है, आई कैन से। कैन यू कोरिलेट द पॉइंट्स, यस और नो? वापस से एक बार, आपका खेत है, आपने गेहूं या राइस उगाया है, यू हैव एडेड पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स चले सॉइल में, सॉइल से प्लांट्स में, प्लांट से इट एंटर्स फूड चेन, इट एंटर्स फूड चेन, एंड सिंस व्हाट आई टोल्ड, ये जो केमिकल्स है डू नॉट डिग्रेड, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, सिंपल उसका डाइजेशन नहीं होगा, ना तो वो एक्सक्रीट होगा, तो कहाँ जाएगा वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में डिपॉजिट होगा, एक्यूमुलेट होगा, जमा होगा। आर यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट? यस। नाउ कम टू द वर्ड बायोमैग्निफिकेशन। बायो का मतलब होता है लिविंग, एंड मैग्निफिकेशन, मैग्निफाई, यू पीपल हैव used magnifying lens, yes or no? What is the purpose of that magnifying lens? To increase the size of letters, say for example, तो यहाँ पे क्या होता है, there is increase in concentration of chemicals which cannot be degraded, which cannot be degraded, and ये जो phenomena है, this phenomena is called as biomagnification. We very well know that if you are talking about food chain, we are at top level. Food chain में humans are at top level, since no animals can kill us and have food. Yes or no? आपने कभी देखा है? We are most dominant organism. Yes or no? Yes. So we human occupies the topmost level of food chain, and ultimately all these chemicals are going to enter inside our body, and this is the possible reason this wheat and rice have pesticide residues due to biomagnification. Are you people getting my point? चलो, नहीं समझ में आया, let's understand by drawing diagram. I am talking about aquatic food chain. What I am talking about? Aquatic food chain. This is an example for making you understand. What is this? This is water, and in this water I have added DDT. What is DDT? वो तो आपको पता है, पेस्टिसाइड है। वो क्या है? पेस्टिसाइड। I have added DDT, and इसका proportion is 0.003 parts per billion. ppb, parts per billion, ये यूनिट है, ये यूनिट है, ओके। ppb stands for parts per billion. अब पानी है, राइट? तो this water is going to taken up by phytoplanktons. It is going to taken up by phytoplanktons. तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका? This is your phytoplanktons. Okay, DDT is not degradable. It is not degradable. पानी
फाइटोप्लैंक्टन्स ने लिया. फाइटोप्लैंक्टन्स आर प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम. फाइटोप्लैंक्टन्स आर प्रोड्यूसर्स. एम आई क्लियर? तो ये पानी लिया, पानी के साथ साथ ये जो डीडीटी है इट गोज इनसाइड दिस फाइटोप्लैंक्टन्स. वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं. ओके, गोज इनसाइड योर फाइटोप्लैंक्टन्स. वहां पे उसका हुआ एक्यूमुलेशन and the proportion of DDT in this case will be 0.003 parts per million. 0.003 parts per million. It's M. Am I clear? Okay. Now, my dear students, this phytoplanktons will be taken up by zooplanktons. इसको आप herbivores भी बोल सकते हो पानी के. Zooplanktons. पानी में डीडीटी किसने लिया? फाइटोप्लैंक्टन्स में. इट इज नॉट डिग्रेडेबल, राइट? तो इस पे जमा होगा. नाउ ज़ूप्लैंक्टन्स फीड ऑन फाइटोप्लैंक्टन्स. फाइटोप्लैंक्टन्स के साथ क्या चला? डीडीटी भी चला. तो यहाँ पे डीडीटी का प्रपोर्शन होता है 0.04 पार्ट्स पर मिलियन. ओके, एज zooplanktons feeds on many phytoplanktons, the proportion of DDT in zooplanktons increases. अब भाई देखो, ये zooplanktons को खाने वाली है स्मॉल फिश. Who is going to eat? मान लीजिए ये फिश है. Who is going to eat? स्मॉल फिश. अब ये फिश है, वो बहुत सारे zooplanktons को खाएगी. तो बट ऑफ कोर्स डीडीटी का कंसेंट्रेशन यहाँ पे क्या होगा? मैग्नीफाई, इंक्रीज होगा 0.5 ppm. अब आप मुझे बताओ, स्मॉल फिश विल बी ईटन अप बाय, यस, लार्जर फिश. स्मॉल फिश विल बी ईटन अप बाय लार्जर फिश. तो यहाँ पे ये लार्ज फिश आई. लार्ज फिश हैव मेनी स्मॉल फिशेस, सो द प्रपोर्शन ऑफ डीडीटी इन दिस केस becomes 2 ppm, right? And last step, if I want to say, this large fish is taken up by bird. I am not going to draw bird, right? Simply, so what I am writing over here, fish eating bird. ये क्या है? फिश ईटिंग बर्ड है, राइट? तो इसमें जो डीडीटी का प्रपोर्शन होगा, इट विल बी 25 ppm. सो एज यू कैन सी, डीडीटी का कंसेंट्रेशन बहुत ही कम है पानी में. 0.0003 पार्ट्स पर बिलियन इट इज. But since it is not degradable, it is not metabolized by organisms, it is not excreted to, DDT remains as such. फाइटोप्लैंक्टन्स है, उसमें डीडीटी रहा. अब बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स कौन खाएंगे? ज़ूप्लैंक्टन्स. अगेन डीडीटी यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ. बहुत सारे ज़ूप्लैंक्टन्स कौन खाएगी? एक छोटी सी मछली, स्मॉल फिश. तो यहाँ पे डीडीटी का कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. सो एज यू कैन सी, स्टार्टिंग फ्रॉम 0.003 पार्ट्स पर बिलियन, द कंसेंट्रेशन इज मैग्निफाइड, आई कैन से, to 25 parts per million in case of fish eating bird. So I hope you got the idea of biomagnification. Dear students, this is for your explanation only. However, we are going to understand the same in class 12. Okay? यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये डायग्राम ड्रॉ किया है कि what actually is biomagnification. Am I clear? I hope this is very clear to you people. What we have understood in today's video, energy flow and biomagnification. I hope it is very clear to you people how particular substance, say DDT, which is not degradable, accumulates in organisms of food chain. Am I clear? So I hope this video is very much clear to you people. Thank you very much.